आपको सफाई करनी है? सफाई करनी है यहाँ भी? नहीं, चलिए ठीक है. This is my family home over here. We're on the terrace on the top floor, close to the Ganges. You can see over there. It's a big river, and the city goes the whole way along this river. Varanasi is a city in North India. It's quite famous. I did my thesis around this city where I spent a lot of my life. Varanasi is known by some as like a timeless city because it's very old. It goes back to 1800 BC, and it went through lots of phases of existence. But it also retained a lot of its history within within the living landscape, which we see, both tangible and intangible. When my parents bought this place back in 1996, most of the buildings you see around here were much shorter. There had been kind of a competition of rising high. Some of them to expand the space of the house as families grow, but also many of them have turned into guest house, and I have tried to get a view of the Ganges, of the river. So our view has kind of gone down immediately, otherwise you could see the whole river from here. We'll take you a bit on a journey around the city to see the main things which I've researched and how they look on the ground. Testing. Does it work? We're at the construction site of one of the areas of the new ropeway of Varanasi, which is quite a scene. Yeah. You want to try this? Yeah. अरे वाह काफ़ी कुछ कर दिए 6 महीने में. क्या लगता है कि बिजनेस बढ़ेगा यहाँ रोपवे की वजह से? बढ़ेगा. अच्छा, अभी तो काफ़ी शोर हो रहा होगा सिर्फ कंस्ट्रक्शन से. हाँ, बहुत परेशानी तो है. परेशानी है. चलिए, आपको क्या लगता है कि लोग आप लेंगे ये रोपवे जब बनेगा? हम रहेंगे तो लेंगे, कहाँ नहीं रहेंगे रोपवे तैयार वगैरह रहे कि नहीं चले जाए. कहाँ जाएंगे फिर? भीड़ हो जाएगा तो देखा जाएगा. हो सकता है चले जाएं. भीड़ हो जाएगा तो कहीं दुकान हटा देगा. स्टेशन मेन स्टेशन है भाई. स्टेशन की दुकान हटा देंगे? तब यहाँ पर एक इकट्ठा भीड़ होगा. अच्छा, आपको भीड़ पसंद नहीं है फिर? नहीं पसंद क्यों नहीं, अगर हम बिजनेस रहेगा तो रहेंगे. अच्छा, शुक्रिया. Got some chai. Shukriya. I think like 4 or 5 years ago was the first time I heard of this possible ropeway project. I was like, whoa, no way, they're gonna make a ropeway in Varanasi. It'll be just a propaganda thing, just the same way they used to say they'll make a metro here. I don't think I've ever seen a city which has a ropeway around it to go use for public transport. But here we are. That big tower we see over there with the grey one, it's one of the pillars of the new ropeway that they're making. And the building next to it is, I think, one of its stations, if I'm not wrong. If we come on this side, I think this is also a continuation of the ropeway. It might keep going from this side. Roads have been expanded a lot during the last 100 years or so, but still most of the roads are quite narrow. So there is a big dreadlock traffic which happens here almost all day. So that was kind of the idea, to relieve the traffic, and the only way that the how could be efficient was to make a ropeway over the city. It'll be interesting to see how this develops, if it does decrease the traffic, and what kind of people it's able to serve, if it's more for tourists or more for locals commuting. But yeah, sadly right now it's a big construction site. This is not a very historical area, but it's still close to the city center. And even here there are some old structures. A friend of mine said that a friend of hers sold their family house to this project. Speaking of traffic, sold their family house to this project, and which was demolished. In return for like a part of a shop around. They will get a shop inside the new station, and yeah, I think she said they regretted it now, since it was a big old building which has completely been torn down. So right now we see on both sides of this building, the old buildings have been torn down, and there's some demolition over there too, but now they're constructing. And yeah,
Varanasi will have a ropeway going all over it with maybe a pretty good view, perhaps. Thank you. Let's stay tuned. The road is blocked right now, so we have to go around. Hi. So right now we are at the beginning of the Dal Mandi road, it's called. Literally it means lentil market, because it kind of gives the idea of how people are packed in here when in a market, which is quite fun. I remember I used to come here shopping quite often. So what I've heard recently is that this whole market street is going to be expanded or enlarged from both sides. But expanding 30 feet on each side of the market means demolishing at least one building on each side. So yeah, this building has been torn down. The right next to it is a mosque, which I wonder if it'll be torn down as well. We'll find out. I hope not. I think places of religious worship are protected. Follow me. तो दाल मंडी में अभी क्या हो रहा है? दाल मंडी में अभी चौड़ीकरण हो रहा है, बट गली का चौड़ीकरण नहीं होता है, रोड का चौड़ीकरण होता है। वो तो है। आपको चौड़ीकरण करना है, आप 5 फीट इधर से लीजिए, 5 फीट इधर से ले लीजिए। सही बात। 10 फीट हो गया। गली का सुंदरीकरण होता है, हाँ, चौड़ीकरण नहीं होता है। रास्ते तो बहुत जगह मिलते हैं, गलियां तो बनारस में मिलती ये है। बनारस जो है गलियों का शहर है। बिल्कुल। जब आप इतिहास खत्म कर देंगे हाँ। तो क्या मतलब रह जाएगा फिर? बिल्कुल सही वो बोला। तो गलियों का धरोहर का शहर है ना इतिहास। हाँ। जब गली आप खत्म करके सब चौड़ाई कर देंगे तो वाराणसी फिर रहेगा कहाँ? काशी, पुरानी ओल्ड काशी कहाँ रहेगी? वो तो है। जो 7 समुंदर से जो टूरिस्ट जो आते हैं घूमने हैं, हाँ। तो बनारसों की गलियां देखने के लिए आते हैं। बिल्कुल। जब आप उसको जब तोड़ के चौड़ा कर देंगे रोड, तो क्या बचेगा? सही बात है। किस काम का है ये रोड चौड़ी कर रहे हैं यहाँ का? ये रोड नई सड़क से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जा रहा है। ठीक है, अच्छी अच्छा। बात है, आप ले जाओ, तो हम ये मतलब नहीं कह रहे हैं। पहले जो टूरिस्ट लोग के लिए यहाँ से जब वहाँ आप जाने के लिए। महाकुंभ में, हाँ। महाकुंभ आया, इतना बड़ा हाँ, महासाहब पिछले साल आया था। पिछले साल आया था, वो हम लोग ने झेल लिया। अच्छा, महाकुंभ उसको झेल लिया तो कुछ भी झेल सकते हैं। कुछ भी झेल सकते सही। हैं। अब इसमें हजारों लाखों लोग की रोजी रोटी है, खत्म हो जाएगी, कहाँ जाएंगे लोग? सही बात। अब इस दुकान से हमारा 8 परिवार चलता है खर्चा। अरे अब ये टूट जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे? ये पहले बताइए। सरकार सही को इस पे बोला। ध्यान देना चाहिए। तो मतलब ये सरकार खरीद रही है सारे दुकान की, क्या कर रही है, कैसे ले रही दुकान है? नहीं खरीद रही है, ये सरकार जमीन खरीद रही है। जमीन खरीद रही है। मकान मालिक मकान मालिक कोई और होते मकान हैं। मालिक को मिल रहा है और दुकानदार यहाँ को कोई नहीं मिल रहा है। मलाक मालिक नहीं है, हम सब दुकानदार सब किराए में दुकानदार रहते हैं। दुकानदार को पैसा नहीं मिल रहा, मकान मालिक को मिल रहा क्या कब तक रह सकते हैं यहाँ? अब पता नहीं है कुछ। है। नहीं, कुछ नहीं पता। कुछ सोचे हैं कि कहीं जा सकते हैं, कहीं यही अब दुकान यही कहीं और बना के। यही एक सहारा है और कुछ है ही नहीं। हाँ, सही कहाँ बात है। जाएंगे? This is another shop or house which has been demolished. You can still see the cute stairs and the wardrobes inside it. बस वही इनको चौड़ी कर में रास्ता बनाना था, गली चौड़ी, हाँ। रोड बनाना था। अच्छा। मकान मालिक को पैसा मिला है, हम लोग किराएदार है। हम लोग अच्छा। दुकान यहाँ पे पगड़ी पे होती है। हाँ, सही बात है। यहाँ 60 फीट चौड़ा करना चाह रहे हैं। हाँ। आप ये देख लीजिए, चौक पे ये 20 फीट की रोड है। हाँ। ये रोड है 20 फीट है, जी। गली को 60 फीट करना चाह रहे हैं। अरे बाप रे, इतने ज़्यादा। आप कहीं और जाएंगे फिर क्या? यहाँ इस अब पास वाले? देखिए, जो हमारे अंदर शॉप भी है ना, अच्छा। जो हमारा मकान है, तो वो बच जाएगी। अब देखिए, अब बचेगा नहीं बचेगा तो ऊपर वाला जान रहा है। अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बिजनेस बढ़ेगा, बिजनेस खत्म होगा। तो मतलब एक बार तोड़िए तब कोई वो दाल मंडी मार्केट तो नहीं होगी, मतलब कोई नहीं, ये दुकान मार्केट वगैरह खत्म हो जाएगी। Varanasi since last 5 to 10 years, but also a little bit earlier than that, has been going through a big transformation. Since it's a big Hindu pilgrimage site, the government 10 years back, when the new government got elected, decided to promote the city, the city a lot, and kind of the narrative was to free it from the shackles of degrading and lack of attention, which to some extent there was, and so develop the city in a way that to both improve the image of the city as well as legitimize the promotion of Hindu heritage and culture in India. My idea is understanding how and why cities, especially in the global south, are transforming at this rate and in this way, similar to how many cities in Europe developed back
in the days after the Industrial Revolution and later. This transformation kind of manifests the impacts of these large-scale developments, financial motives, and how the financial motives mix in with the local culture. So in my research, I found out that this park called Benya Bagh, it used to called, went through a big restructuring. You could also see a big change from the satellite images. So I was curious to see what the sitch is over here. Now they made a big, spacious, brand new entrance here, which is cute. We had to get a ticket, which is new, but it was just 10 rupees, which is 10 euro cents. But still, let's see. We're going straight in. Seems like the park has changed its name from to Raj Narayan Park. I'm not sure what Raj Narayan is. And it's said it's part of the Smart City mission. So let's go see how smart this park is. So I looked him up. Raj Narayan seems to be a freedom fighter back in the days. He was part of the Quit India movement and did some student protests, which is interesting. And he at some point he was part of the Socialist Party. And underneath the park there's they made a car parking, where we saw some cars entering on the gate on our right. So imagine this area over here underneath is a big car parking that was mentioned. This little statue of a sun salutation routine, which is cute, with some more yoga-oriented depictions, I think. But yeah, I don't think I ever came here before the development was done. But definitely looked much more abandoned. There is the 10 rupee entrance fee. I would not imagine it to be a big barrier for most people to come, and I think it's the least tourist-oriented development I've seen so far, because we don't see any tourists. But there's still less people than the average public space that I would expect. So it's not exactly a complete common area, I will say. It's cute that we see some couples having some time here and space. Definitely some more commercialization. Some shops popped up. I wonder if they're successful. Oh, we can't get exit from here. I'm lost. Definitely a lot of banners showing that it's part of the Smart City mission. It's a central park redeveloped by Varanasi Smart City. Spans in the area of 13.5 acres. Features walking, jogging path, open gym, food courts, an open-air theatre, green spaces, and a meditation area, etc. The premises of this park is fully accessible for persons with disability, ensuring an inclusive and enjoyable experience for all visitors. The project was inaugurated by the Honorable Prime Minister Narendra Modi on December 23rd, 2021. सर अगर डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट लगभग पिछले 5 सालों में बहुत ज़्यादा हुआ है। हाँ, वो तो है। तो अब 2020 से कोई भी डेवलपमेंट अब रातों रात होता नहीं है। 5 साल का समय लगा, मगर ये क्या है कि लगातार ये प्रोसेस जारी रहा है डेवलपमेंट का। अब फाइनली देखिए काम इस पर चल रहा है, जो रोपवे है इस पर काम चल रहा है। तो मिला जुला के जो इसको बना रहे हैं, जो मोदी जी इसको जो क्या कहते हैं कोटो सिटी जो बना रहे हैं, लगभग इस पर 40% तक तो पहुंच चुके हैं। 40% जो चाहे थे बनाना वो हो गया। हाँ, 40% तक प्रोग्रेस हो चुका है। मॉडर्न स्मार्ट गार्डन हो गया, और स्मार्ट तरह तरह की जो प्लेसेस हैं वो क्लियर हो गई। जो गंदे जो तालाबों थे वो क्लियर हो गए। वो मतलब अच्छे से इतने अच्छे तरीके से उसको जुड़ेदार कर दिया गया, मतलब सुंदरीकरण कर दिया गया कि अब वहाँ पर कोई गंदगी का नामो निशान नहीं है। सबसे प्लस ये कि 3 शिफ्ट में जो यहाँ पर जो ये स्वीप वाला काम चलता है, जो झाड़ू पोछा वाला, ये तीनों टाइम चलता है। अच्छा। इससे और ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है साफ़ सफाई के मामले में। अच्छा, सही बात है। और रही बात, अब अगर ये गंगा नदी को देखा जाए तो पहले बहुत सारा कचरा बहता था। अब तो सफाई में 4-5 बोट ऐसे लगा दी गई हैं जो केवल ये वाटर को साफ करने का काम करती है। जो मतलब ऊपर का कचरा है उसको निकालते हैं। हाँ, उसको इकट्ठा करें फिर कहीं और जाकर डंप कर देते हैं। अच्छा, पब्लिक से उसका सामना नहीं होने देते हैं। चलिए, जो लेकिन पानी में मिला हुआ उसको नहीं हटा पाते ना। पानी में जो मिलकर एकदम अदृश्य हो गया उसको क्या करेंगे वो? सही बात है। वो तो अपने जगह पर हो तो अदृश्य है, जो दिख रहा है उसको हटाएंगे ना। सही बात। चलिए, तो अभी 60% बाकी है लेकिन डेवलपमेंट्स का 60% मिला जुला के ये बाकी है सर कि यहाँ की सड़कें जो है थोड़ी सी अभी डिस्टर्ब है। अच्छा, लेकिन प्लान है बनाने का कि क्यों नहीं। जब सारा कुछ काम हो रहा है, प्लान के हिसाब से सब कुछ सही हो रहा है,
आगे ये भी क्लियर हो जाएगा। अच्छा, सही बात बस है। ये कि गवर्नमेंट जो है बदलनी नहीं चाहिए, अच्छा, बदल जाएगा पॉलिसी फेल हो जाएगी फिर। सही बात है। तो अब जो आदमी योजना बना के मेहनत कर रहा है तो उसका फल भी उसी के हिसाब से मिलना चाहिए। चलिए, और आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है इस इन 5 साल में? 5 साल में सबसे ज़्यादा फायदा हमको ये हुआ कि क्राइम क्राइसिस एकदम देखने को नहीं मिल रहा है। क्राइम, अच्छा। क्राइम एकदम नहीं। अच्छा, ये सही है। पहले हर गली में एक कट्टेबाज पैदा होता था, जी। तो आप भी जान रहे हैं, अगर है यहाँ बनारस बता रहे तो आप भी जान लेते थे। हाँ, हाँ, सही बात है। तो ये भी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। अच्छा, ये सिक्योरिटी बढ़ गया क्या? हाँ, पुलिस बढ़ गई है? सिक्योरिटी बढ़ गई है, प्लस ये कि पहले गली गली में अंधेरा बहुत ज़्यादा रहता था, केवल लाइटें रोड पर जलती अच्छा, थी। लाइटें बढ़ा दी। गली गली भी रोशनी हो गई है। अब लाइट जाती भी है ना, पहले जाती थी बहुत। या पहले लाइटें बहुत जाती थी, सुबह के जाती जाती शाम को आती थी। अब यहाँ वो दाल मंडी में तो काफ़ी लोग का दुकान चला जा रहा है, हम बात किए वहाँ। कुछ अलग तरीके से कर सकते हैं ये डेवलपमेंट, थोड़ा जो लोगों का नौकरी ना जाए। नहीं, इस पर हम नहीं कुछ करना चाहिए। नहीं, मतलब ऑन कैमरा है ना, इस पर नहीं कुछ कर सकते हैं ना। देखिए कि सबसे सीधा 100 की सीधा एक बात हम जानते हैं, जैसे जैसे समय बदलेगा बदलाव का दौर दिखेगा। अच्छा। चाहे वो खुशी में हो चाहे नाराजगी में हो। चलिए। आज ये जो सड़कें बनी है, आप 100 साल पहले चले जाइए तो पहले खेती बाड़ी हुआ करती थी, तो जी। जब ये सड़कें निकली तो किसान रोना शुरू किए, मगर उसी सड़कों से लोगों का कारोबार जुड़ गया। अच्छा, तो सही बात इसी है। तरह से जो समय बदलेगा दौर बदलेगा और बदलाव दिखेगा। थोड़ा समय के बाद और फायदा होगा। हाँ हाँ। अच्छा, चलिए। थोड़ा सा ये है कि शुरुआती झटके जो लगते हैं ना, बाद में संभलने के लिए लगते हैं। जी, बिल्कुल। अगर हम ये झटके को अगर गलत तरीके से देखेंगे ना, तो आने वाली जो नस्ल है, जो आने वाली जनरेशन है ना, उनको हम जागरूक नहीं कर पाएंगे। उनको भी कहेंगे तुम भी जैसे हम बिताओ वैसे तुम भी बिताओ इसमें। अब उनको क्या कि जब हम झेलेंगे तो उनको नया रास्ता देंगे कि भैया इसमें तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सिस्टमेटिक तरीके से चलोगे। ये बना दीजिए। हाँ, हाँ। चलिए, शुक्रिया फिर। Hey there, everyone. This working? What we're seeing here is a big gate to the Golden Temple, the Vishwanath Kashi Temple, and if we can notice, it's quite different from the rest of the ghats around here, the various city banks, and that's because it was constructed just a few years ago. It was inaugurated in 2019 by Modi himself. Sticking a picture of how it was before, right over here. See the contrast maybe. Unfortunately, to make this big space and the corridor which is inside this, because the temple is not close by, the government had to tear down 200 odd buildings in the old lanes, and many people lost their homes and shops in the process. Now we're up the stairs. You can see a bit the big walls and staircase which was made here. And if we come on this side, we can see a bit the corridor which was made as part of the temple. All this area was various small houses like the rest of the city, but they were torn down to make this long corridor. The temple is not there until for another like 50 meters or so. It makes a lot of space for the visitors. Many locals are a bit against the structure. 5 साल तो हम यहाँ बोट चला रहे रीता घाट पे। अच्छा, 5 साल से? हाँ, जैसे मेरा यहाँ घर रहा था, तोड़ के चलेगा पड़ा, यहाँ तब तोड़ दिए। अच्छा, यहीं पे घर था आपका? हाँ, तो यहाँ तोड़ दिया तो हम लोग पढ़ा चले। आपको बेचना पड़ा कि कोई भगा गवर्नमेंट ने ले दिया? लिया। आप किराए में थे पहले? हाँ, तो आपको क्या लग रहा है कि अच्छा किया ये घर छोड़ के? गरीबों का तो नुकसान कर दिया, अमीरों के तो बढ़िया चल रहा है। महीनों का बढ़िया चल रहा है, आपका तो बढ़िया नहीं चल रहा होगा? नहीं, हम लोग का नहीं, हम लोग गरीब है, हम हाँ। लोग का नहीं मतलब। अच्छा, ये जैसे बोट है नहीं, हम मालिक के हम लोग चलाने वाले हैं, अच्छा। तो थोड़ा मालिक का बोट है। थोड़ा बिजनेस बढ़ा है ये हाँ, आप थोड़ा आज के इन बहुत सालों में? बढ़ गया है। बहुत बढ़ गया। अच्छा, फ़ायदा हो रहा है कि ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा है उसका? आदि हो रहा, फायदा हो रहा है मालिक लोग को, हम लोग को नहीं। अच्छा, आपको नहीं हो रहा था? आपको उससे ज़्यादा ही मिलता है? मालिक का जाएगा तो 2000 सवाई रहेगा तो 200 देगा, बाकी कुल मालिक हो जाएगा। अच्छा, तो अब आप कहाँ रहते हैं? यहाँ घर टूट गया तो यहाँ थोड़ा आगे घाट पे ही, घाट के पास ही? मतलब घाट पे थोड़ा और आगे। अच्छा, चलिए, शुक्रिया. It's back, but now the construction is expanding, as we can see behind here. Right next to this embankment is Manikarnika Ghat. It's a very important cremation ground where bodies are burned just right next to the river, and then their ashes are immersed in the river. It's a very important holy ground as well for the locals. Many people come to Varanasi to die and achieve salvation from the cycle of rebirth. The idea is to make the space also wider, flatter, make more cremation spaces, make some enclosed cremation spaces, and follow a similar
architectural model. A lot of criticism came also because of the detachment from the architectural view from the local landscape and from the local architectural tradition. Recently, there's also been some criticism for the work because they destroyed one of the important idols next to the cremation grounds, which brings into doubt the religious promotion motive of many of these developments. We'll show a picture here of how it was before and what the planned designs are, which are quite a contrast. Eventually, we'll see how it turns out. Rahul DeSantis, Varanasi, India. I think especially this research shows that the importance of valuing the old economies and systems that we used to live in, which used to come before capitalism, created a lot of the problems we have nowadays, both locally and globally. To search for answers to our today's problems in the past, preserve what's been changing rapidly, and to avoid its destruction, and to expand this model beyond in preserving and improving our life in cities. Thank you.